Hello students, welcome back to our tutorial. So today we will be doing Act 5 Scene 2. So here in this scene we will see that some of the Scottish soldiers have gathered here, namely Lennox, Angus, Caithness, Meniet, to discuss the two army. One from England, which is of Malcolm, the real owner of the throne, who is the elder son of Donalbain, and the other army is of Macbeths. Both are going to fight here a battle, and Macbeth is the treacherous person over here. So at the end, we will see whose army they are going to actually support. So let's get started. So in this scene, we have Meniet, Caithness, Angus, Lennox, and other soldiers who enter along with the drummer and flag. So we will see that all these four men, that is, they were the Scottish soldiers, are going to talk about the army of both Malcolm's army and Macbeth's army. Now here we will see that whose army they really going to support. Okay. Now Meniet says, again, as I said, this Meniet belongs to Scottish army. He says, the English power is near, led on by Malcolm, his uncle Siward, and the good Macduff. Revenge burns in them, for their dear causes would too the bleeding and grim alarm excite the mortified man. He says that the English army, that is the army of Malcolm from England, along with him there is Siward. So he says that English army is very near, and there is Siward in that army. There is also Macduff. We know that Macduff's children and wife were killed by Macbeth, right? And this Malcolm's father, that is Duncan, King Duncan, was also killed by Macbeth. So both of them are the right ones to take revenge. So they are burning in revenge, he says. And the reason or the cause of their revenge is very strong. And it is said that the reason for which they are going to take the revenge is alarming also. It can alarm the dead men. The dead men even will rise from their graves and rush to the battlefield after knowing the reason of their revenge. Okay. To this Angus says, near Birnam Wood we will meet them. That way are they coming. So this Angus says that they are going to meet together near the Birnam Forest. That is the army of Malcolm, that is the English army, and the army of Macbeth. Both are going to meet near Birnam Forest, and they are coming from that way. Now Caithness says, who knows if Donalbain be with his brother? So they are guessing about the army. We do not know that if Donalbain is also there with his brother, that is Malcolm, in the English army. Okay. So यहाँ पे मेनियत, कैथनेस, एगस और लिनॉक्स चारों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं. ये दोनों सोल्जर्स आर्मी के बारे में बातें करते हैं, जो कि मैल्कॉम होता है. मैल्कॉम जो कि इंग्लिश आर्मी की तरफ से, मतलब इंग्लिश आर्मी को लेके आ रहा है युद्ध में लड़ाई के लिए, और एक तरफ मैकबेथ की आर्मी है. तो ये दोनों ही आर्मियों के बारे में बातचीत करते हैं. इनके बात से हम लोग पता लगाएंगे कि ये कौन से आर्मी के तरफ है. ठीक है. तो यहाँ पे पहले वो कहता है कि इंग्लिश आर्मी, मतलब मैल्कॉम की जो आर्मी है, वो बहुत ही पास आ चुकी है. उनके आर्मी में सिवॉर्ड है. सिवॉर्ड उनको पता है स्ट्रेंथ और करेज में बहुत ही जाने माने हैं, बहुत ही स्ट्रांग है. और उसी के साथ ही वहाँ पे मैकडफ भी है. मैकडफ के बच्चे और वाइफ, इन लोगों की हत्या की जा चुकी है मैकबेथ के द्वारा. और दोनों में ही बहुत से रिवेंज भरे हुए हैं. वो दोनों ही बदले की आग में जल रहे हैं, और बदला लेने के लिए वो एकदम तैयार है युद्ध के फील्ड में उतरने के लिए. तो यहाँ पे वो कहता है कि उनके पास जो रीजन है, जिस कारण से वो यहाँ पे युद्ध करने आए हैं, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई आदमी अपने कब्र से भी निकल के युद्ध में कूद सकता है लड़ाई के लिए, अगर वो जान जाए कि लड़ाई का जो कारण है वो बहुत ही पर्याप्त है. अब यहाँ पे एगस कहता है कि नियर बिरनाम वुड शैल वी विल मीट देम, मतलब बिरनाम फॉरेस्ट जो है वहां पे वो दोनों ही आर्मी का युद्ध होगा, और वहीं पे वो दोनों आर्मी एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं. इस पे कैथनेस पूछता है कि क्या डोनाल्डबेन जो डंकन के छोटे बेटे हैं, क्या डोनाल्डबेन उसके भाई के साथ है, ये कौन जानता है? मतलब ये जो मैल्कॉम है उसके साथ क्या डोनाल्डबेन भी है? इन लोगों को ये ठीक से पता नहीं है. चलो नेक्स्ट. सो हियर वी हैव लेनॉक्स. लेनॉक्स सेज, फॉर सर्टेन सर ही इज नॉट.
I have a file of all the gentry. There is Siwad's son and many unrough youth, and even now protest their first of manhood. So Lennox says that he has the list of all the important men or the important soldiers that are there in the army of Malcolm. Okay. So gentry is the list of the important soldiers, he says. And in that gentry, he knows that there Donalbain, that is the younger son of Duncan, is not there in that army. And he says that there is Siwad's son. Siwad, we know, is known for its valorness, is known for the courage and the strength of the army of the Siwad. So Siwad's son is also there in the army, and there are many young soldiers are also there. The soldiers are so young that they do not have beard also, but yet they have come to fight or join the battlefield. And the reason behind it is only because they wanted to prove or show off their manhood. These young men or the young soldiers who even do not have beard have also come to fight in the battle just to show off that they have turned into a man or their manhood. Now Menhiet says, but where is what does the tyrant? What is the tyrant Macbeth doing? They do not have such knowledge, so that's the reason Menhiet asks about tyrant, that is the ruler Macbeth. Katniss to this replies, great Dunsinane, he strongly fortifies. That is, this Macbeth is completely prepared with arms, ammunition, and soldiers near the Dunsinane hill. He strongly fortifies. Fortifies means he is prepared with arms, ammunition, and the soldiers near the Dunsinane hill. Some say he's mad. Now, some of the people that are there looking at him, looking at Macbeth, says that he has turned insane, he has turned mad. Others that lesser hate him do call it valiant fury. The ones who doesn't hate him much, they say that the fury or the anger in Macbeth is appropriate, is a noble cause. Why? Because they do not know the reason of the battle. And to this, again, he says he cannot buckle his distempered cause within the belt of rule. He is again pointing or commenting on Macbeth. He says that this Macbeth, we all know, cannot control or do not have control upon himself or his anger. He do not have even control over his anger, this Macbeth. यहाँ पे लेनॉक्स बताता है कि पक्का है कि जो डोनाल्डबेन है वो आर्मी के लिस्ट में नहीं है। वो कहता है मेरे पास लिस्ट है जितने भी महत्वपूर्ण सोल्जर्स हैं उनके आर्मी में है, पर उन आर्मी के लिस्ट में जो डोनाल्डबेन का नाम नहीं है, तो डोनाल्डबेन नहीं है वहाँ उस आर्मी में। और वहाँ पे जो है वो है सिवार्ड का बेटा है वहाँ पे, और कई ऐसे युवा भी हैं जिनकी अभी तक दाढ़ी भी नहीं आई है और जो अपने आप को बस पुरुष साबित करने के लिए ये युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनियत पूछता है पर वो तानाशाह मैकबेथ कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है। इस पे कैटनेस कहता है कि वो डनसिनेन के पास वो अपने आप को, अपने सिपाहियों को और अपने हथियार को बहुत ही मजबूत बना रहा है। ओके, और नेक्स्ट वो कहता है कि वो कुछ लोग उसे पागल कह रहे हैं, पागल का नाम दे रहे हैं, और बाकी लोग जो उसे कम नफरत करते हैं वे उसकी बहादुरी को पागलपन मानते हैं। बहादुरी में उसका पागलपन कहते हैं उसको। और लेकिन असल बात यह है कि वो ना ही अपने आप को और ना ही अपने गुस्से को काबू में कर सकता है। और ये बात यहाँ पे कैटनिस इसलिए कहता है कि ना ही वो अपने आप को और ना ही गुस्से को काबू कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे हम उसके हाथ से सत्ता को निकलते हुए देख सकते हैं। मैकबेथ के हाथ से जो रूलर का जो थ्रोन है वो यहाँ से थोड़ा घिसक रहा है, उसके हाथ से निकल रहा है। सो नेक्स्ट, so here we have Agus. Agus says, now does he feel his secret murders sticking on his hands? Now minutely revolts, upbraid his faith breach. So this Macbeth is now feeling that the blood he has committed the secret murders, many murders, right? So the blood from those secret murders are still sticking on his hands. They are not able to come out of his hands, and every minute rebellious armies punish him for his treachery. The armies that are rebellious against him, the unfair means that he adopted this Macbeth. Now the army are also treating him the same way. Okay, those he commands move only in command. Now the soldiers who are listening to his commands are just following his orders, and they are not doing anything out of love, nothing out of love. Now does he feel his title hang loose about him like a giant rope upon a dwarfish thief? Now he says that the title of the king is now hanging upon him loose,
That is, it is not fitting him. The title of the king is not fitting this Macbeth. And it seems as if he is a dwarf person who is trying to get into or fit himself into a robe which is of a giant person. So, how it will seem? It will really seem very odd. So, actually, he was slowly losing the throne. Okay. Now, to this many it says, who then shall blame his pressed senses to recoil and start when all that is within him does condemn itself for being there? He says that whatever is there in him, who can blame for the disturbed senses of this Macbeth? The Macbeth is having completely disturbed his senses, and nobody can recoil, means restart or change the thoughts and the senses of this Macbeth. So there is nobody who can change the thoughts which are already pested, means destroy. Okay. And they further say that when everything inside him, that is his inner self, all of it, he is having a guilt inside him. All of it are condemned itself for what it is done, whatever is being done or whatever he has done. So he is regretting from within. Okay. तो यहाँ पे एगस कहता है कि अब मैकबेथ जो है वो अपने छुपे हुए जो भी मर्डर्स कमिट किया है, हत्याएं किए हैं, उनके अब खून वो अपने हाथ पे चिपके हुए देख सकता है. शायद वो हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं उसे. और आगे वो कहता है कि और जितने भी उसने छोटी छोटी बगावतें की है ना, माइन्यूट रिवोल्ट्स, उसके लिए सभी उसको कोस रहे हैं अभी. और जो लोग उसके आदेश मानते हैं वो सिर्फ मजबूरी में ही अभी उसके आदेश मान रहे हैं. ये नहीं कि वो प्यार से या आदर से ये सब उसके लिए कर रहे हैं. कोई भी उनके अंदर प्यार या फिर आदर नहीं है. अब जो भी सोल्जर्स है प्यार आदर से नहीं, बस करने के लिए उसका काम कर रहे हैं. अब उसे महसूस हो रहा है कि राजा का पद उससे बहुत बड़ा है. यहाँ पे वो वही कहता है, राजा का जो पद है उससे धीरे धीरे घिसकते जा रहा है. जैसे किसी बौने चोर के ऊपर विशाल आदमी का वस्त्र लटका दिया गया हो. ड्वार्फ को मतलब बौना. तो बौने आदमी के ऊपर अगर बड़े से आदमी का कोई कपड़ा पहना दिया जाए तो वो उसके अंदर डूब जाएगा. तो वैसे ही जो किंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी नियम है, वो कुछ भी नहीं मान के चल रहा है, इसलिए अब वो उसके अंदर डूबता जा रहा है. इस पे मैनियत कहता है तो फिर कौन उसे दोष दे सकता है? अभी उसे दोष भी नहीं दिया जा सकता. उसका मन बेचैन होकर डरता है. किसका मन? कोर्स मैकबेथ का. अंदर ही अंदर मैकबेथ बेचैन है, वो खुद से ही परेशान है. उसके अंदर ही पूरा गिल्ट भरा हुआ है और सारी बातें उसे अब गलत ठहरा रही है. चलो नेक्स्ट. So next we have Katniss. Katniss says, "Will March we move on to give obedience where it is truly owed? Meet we the medicine of this sticky wheel, and with him we in our country purge each drop of us." Now Katniss says, well, we are going to march towards the army of Malcolm. Now we have come to know that all these four people, that is Lennox, Katniss, Meniet, we know, and Agus, all of them are going to support the army of Malcolm, not Macbeth. Okay, so they're going to march towards the Benham forest near Malcolm's army is there, and there they're going to pay out of obedience, out of loyalty, they are going to join the army of Malcolm, because he says that he is the right person who truly owe our loyalty. He is the one who is going to provide medicine to the country, that is Scotland, and with him pour when in our country purge each drop of us. That is, they are going to pour their blood in the battlefield along with this Malcolm's army in order to cure their country. Okay, so they are going to fight till the end of their life, and they are going to shed their bloods in the battlefield just to cure their country. To this Lennox says, or so much as it needs to dew the sovereign flower and drown the weeds, make we our march towards Benham. Now, this Lennox says that, and we are going to shed this blood as much as we need to water the royal flower of Malcolm. So they're calling this Malcolm as a royal flower. So they are going to water this flower out of their blood. So when they are going to shed the blood, it will be like a water to the flower, which is Malcolm. And they're comparing this with Macbeth, saying that they're going to shed the blood until and unless the weed over here, they are referring to Macbeth. The weeds are the unwanted plants that grow in the fields, they destroy the crops. So this weed has been referred to Macbeth.
they say that they are going to drown this weed in the battlefield through their blood. They are going to shed so much blood in the battlefield that this weed is going to get drowned. And so now they are going to march towards the Birnam forest. Okay, तो यहाँ पे कैटनिस कहता है चलो हम आगे बढ़ते हैं, अपनी वफादारी वहीं दिखाएंगे जहाँ सच में देनी चाहिए। मतलब उसकी वफादारी वो मैल्कम की आर्मी को देना चाहते हैं। वो कहता है अब हम इंसान से मिलेंगे जो हमारे बीमार देश के लिए दवा है। ठीक है, मतलब मैल्कम की बात कर रहे हैं वो। और उनके साथ मिलकर हम सब अपने देश के लिए सारी बुराइयों और परेशानियों को दूर करने के लिए अपना अपना योगदान देंगे। ठीक है, मतलब अपने देश को बचाने के लिए अपना खून जितना भी बहाना है युद्ध के मैदान में वो वहां पे बहाएंगे। इस पे लेनॉक्स कहते हैं या जितना जरूरत हो वो उतना ही योगदान देंगे ताकि असली राजा जो है, मतलब असली मैल्कम, ही इज द रियल ओनर ऑफ द थ्रोन। सो जो असली राजा है मैल्कम, वो फूल जो है वो सींचा जा सके। मतलब वो मैल्कम को सींचने की बात कर रहे हैं अपना योगदान देके। और जो बुरे लोग हैं, मतलब वहां पे जो खतरनाक बुरे लोग हैं, मतलब कि मैकबेथ, वो यहाँ पे खत्म हो जा सके। तो यहाँ पे कहता है वो चलो अब हम चलते हैं बिरनाम जंगल के पास जहाँ पे ये युद्ध होना है। ठीक है, सो ऑल ऑफ देम मार्च एंड दे एग्जिट। तो यहाँ पे हम ये सीन खत्म करते हैं। सो हियर वी एंड एक्ट 5 सीन 2। सो दैट्स इट, थैंक यू।